बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो शेयर किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, राइट देयर फंक्शन, राइट टू फंक्शन ऑफ नेजल क्यूटी, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड मोकस। तो ये जो है और का ऑप्शन जो है, या का ऑप्शन जो है उर्दू मीडियम वाले, इसका मतलब जो है क्वेश्चन जो है दोनों तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद है व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स, व्हाट इज देयर फंक्शन, या फिर हाउ स्पेसिफिक साउंड्स फॉर टेकिंग इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेकिया इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ सी शेप्ड कार्टेलेज रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया। उसके बाद है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एलुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायाफ्राम की डिफाइन एंड गिव द फंक्शन ऑफ डायाफ्राम, और व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लोट, राइट डाउन देयर फंक्शन, राइट डाउन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द रेस्ट और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो इसका आंसर जो है बुक की पेज जो 7 है वहाँ पे मिल जाएगा। तो इनको जो है आप देखते जाए, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ता ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। तो ये चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो हैं आप स्क्रीन पर देखते जाएं इनको। तो इनको देखते जाएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं ये शार्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह पेपर इसी में से लग जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, तो इनको जो आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। तो ये चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के जो शार्ट क्वेश्चन हैं तो इनको देखते जाएं। डिफाइन होमोस्टेसिस, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सेलरेशन, और डिफाइन गिटेशन, डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेक्टरी एंड गिटेशन। ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शार्ट क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त उनको देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 के। What are the main organs for the homeostasis in man? Write down the names of 4 organs of urinary system. What is kidney stone? Write down the causes of kidney stone. What define lithotripsy? What do you mean by kidney failure? Write down 2 major causes and symptoms of our kidney failure. Or define dialysis. Write names of 2 methods of dialysis. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 11 के शार्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज रीनल कार्पुसल, रीनल कार्पुसल क्या है, इसके 2 मेन पार्ट्स या 2 बड़े हिस्से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, स्टिमुलाई की तारीफ करें, मिसालें दें। रिसेप्टर की तारीफ करें, मिसालें दें। डिफाइन रिसेप्टर्स एंड गिव एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पांस एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं ये शार्ट क्वेश्चन जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बाकी जो है शार्ट क्वेश्चन इनको देखते जाएं। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स मैकेनिज्म आना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो वहाँ से जो है आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चंस।
तो इनको जो है तैयार कर लीजिएगा। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं आप लोगों के शार्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28, what are the causes and symptoms of paralysis? Write down the symptoms and treatment of diabetes mellitus। अली इब्ने ईसा किस बिना पर मशहूर था? Define two causes of epilepsy। What do you mean by brainstem? Why the eyes of the day and cat shine in the night? What do you mean by night blindness? Write down the pupil reflex in dim and bright light. Write down two growth effects of some somatotrophin hormone and human body। Difference between डॉर्फिज्म और जो है जैगनेट, इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस है। दोनों तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर 13, हड्डी की तारीफ करें, मिसाल दें। डिफाइन बोन एंड गिव एग्जांपल। तो इनको जो है आप देखते जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये आप लोगों के शार्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। Define the origins and insertions of muscle, write their function। Define osteoporosis, write two causes of osteoporosis। Difference between elastic and fibrous cartilage। Define hinge and ball and socket joints and give example. What is meant by antagonism? Movement of muscles। Next, flexor muscle और extensor muscles में difference। तो बाकी जो है ये देख लें। तो ये आप लोगों के इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, तो इसके देखते जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एपिक कॉटल और हाइपोकॉटल में डिफरेंस, एपिजल और हाइपोजल जर्मिनेशन, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सुपरमियोजेंसिस और ओवोजेंसिस में डिफरेंस, और एम्ब्रियोस और उसके पार्ट्स, एसटीडीएस। ये डिफरेंस वे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये उसमें जो है वो मेंशन है। तो ये आप लोगों के इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है शार्ट, डिफाइन बेनिफिशियन हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन प्लेनेरिया। Next, chapter number 15, define genetics and inheritance, difference between gene and allele, define DNA reflection, difference between translation and transcription, difference between genotype and phenotype, and give example. Next है difference between homozygous and heterozygous genotype, or why did men use pea plants in experimental work, or write importance of pea plant. Difference between monohybrid and hybrid cross, state Mandela of segregation, state Mandela of independent assortment. Next, what is meant by Punnett square? Define codominance and incomplete dominance with example. Difference between continuous, discontinuous variation. Give example. Write down the main sources of variation.
Difference between artificial and natural selection. What is the importance or advantages of artificial selection? Next, what do you know about breeds and cultivars? What is the theory of special creation? What are homologous chromosomes? Define nucleosomes. How they formed? Write the names of nitrogenous bases of DNA. Difference between dominant and recessive allele. Or what is a nucleotide? Write the names of its three components. Jafir names of four nucleotides. उसके बाद next chapter define population and community, define ecosystem, give example, difference between biotic and abiotic components of ecosystem, define ecology, difference between carnivores and herbivores, define decomposer, write their importance. उसके बाद है define food chain and web chain. और next है define ecological pyramids, write the names of its two types. Define unification, nitrification, and denitrification. Define predation and give an example. Write down its one's benefit. What is meant by eutrophication? What is the reason of इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं यूट्रोफिकेशन के वो कंपटीशन, राइट डाउन इट्स टू टाइप्स, डिफाइन बायोस्फेयर, राइट इट्स थिकनेस, डिफाइन पैरासिटिज्म या फिर डिफरेंस बिटवीन इक्टो पैरासिटाइज और एंडोपैरासिटाइज विद एग्जांपल, और ट्रॉफिक लेवल, डिफाइन कॉमनसिज्म एंड म्यूचुअलिज्म. With example, what is meant by global warming? Write two effects. What is acid rain? How it is produced? Write two effects of acid rain. What is meant by nitrogen fixation? Define symbiosis. Write the names of its steps. Define biogeochemical cycle. Name some of them. So how smoke farm, right, to a disadvantage? How does energy flow in an ecosystem? What do you mean by afforestation? And so on. तो इनको देख लीजिएगा. Chapter number 16 के most important short question. Next, chapter number 17, define biotechnology and genetic engineering. उसके बाद what are fermenter, write down two advantages of using fermenters. Write briefly the basic steps in genetic engineering. Write two objectives of genetic engineering. Write down some uses of formic acid. What is meant by novel protein or mini food. Define fermentation. Write down the name of two basic types of fermentation, or write the names of bacteria. तो ये इस तरह भी आ सकते हैं, यूज्ड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. राइट डाउन द यूज ऑफ यूक्रेनाइज एंजाइम फ्रॉम विच टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इट हैज बीन प्रोड्यूस. सिंगल सेल प्रोटीन. इसके important, what do you mean by alcoholic and elastic fermentation? What is meant by genetically modified organism? Write two characteristics of a transgenic animal. Next, a difference between batch and continuous fermentation. What do you mean by recombinant DNA? Write down uses of fermentation in dairy products. Write down two application fermentation, or how pickled fruits and vegetables are preserved by fermentation. Write down the names of four industrial products produced through the process of fermentation. What are thymosin and beta endorphin? What is the function of restriction एंडोन्यूक्लियासिस एंड और जो है ये लैगीज एंजाइम. तो इनको देख लीजिएगा. राइट एंड टू अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. नेक्स्ट है डिफाइन फार्माकोलॉजी या डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी. तो ये ड्रग्स वाले शार्ट क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर के, तो इनको देख लें अच्छी तरह, फिर जो है हम आगे मूव करते हैं. तो इनको देख लें. नार्कोटेक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और बैक्टीरिया बैक्टीरिसिडल और बैक्टीरियोसिटेटिक, सल्फर ड्रग्स, marijuana were obtained, and so on. उसके बाद what do you mean by synthetic drugs, antigens and antibodies? What are the hallucinogens or stigma? What is mean by drug obtained from animal? What is mean by drug obtained from plants? और आयोडीन टिंचर है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स है, और सेफलोस्पोन्स है, वैक्सीन है और उसके पर्पज़ हैं.
मेस्कालन और सैलोसन के ज़राए हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बायों के, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो चैनल साथ जुड़े रहें, और कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।